I am Subhajit Rakshit from West Bengal. I have completed my graduation from Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, West Bengal. I have to cover all the portions of to hold the syllabus. I have to complete it fast. I gave around 80 to 90 mock tests, and then after you have to select the questions accordingly. कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें बोल सकते हो कि भाई साहब मैं ही हूँ जो हूँ? We know many things, but the basic portions we don't know, because IBPS is very much unpredictable. They give questions from anywhere, and if you don't know any answer, then say no. ACC course also, this is a very good for me also. Thank you. So thank you also ACC team for giving me the opportunity to say my strategy in this platform. It is very much proud for me. हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माय नेम इज सागर राणा और आज फिर हम एक कैंडिडेट को लेके आए हैं। शुभजीत, रक्षित इनका नाम है और AFO PNB है इस टाइम पे, है ना। PNB ने इस बार सभी के लिए थोड़ा सा बड़ा सा पिटारा लाया था ना, तो सभी को ऑलमोस्ट PNB मिल चुका है ना। खुश तो सारे ही बहुत होंगे कि सेकंड लार्जेस्ट PSU मिल चुका है उनको, तो अच्छी बात है। PNB की वैकेंसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसी पर्टिकुलर बैंक में सेलेक्ट हुए हैं। चलो शुरू करते हैं विद द कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑब्वियसली शुभजीत, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, है ना। आपने ये एग्जाम है ये क्रैक किया है ना। चलो कंटिन्यू करते हैं विद योर इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने किस किस तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या किया है ना। थोड़ा सा एक बार हमारे व्यूअर्स को वो सब चीजें बता दीजिए। I am Subhajit Rakshit from West Bengal. I have completed my graduation from Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, West Bengal, and I have completed my post-graduation from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. And I have prepared for AFO exam. This is my third attempt in AFO examination. For last 2 years, I did not. For last year, only for 2 marks, I could not get the seat. But this year, I scored above 7 marks more than the cutoff. So for AFO examination, mainly I will say that you have to focus on the preliminary examination, because you can see that the cutoff for the preliminary exam is jumping like 2 times, 3 times in this year. I think more than the 2022. But so you should focus on the prelims first. Then for mains, 3 to 4 months study is enough. And for interview, you can start after mains, no problem. But first focus on the prelims, then mains. I will say that. Okay, so you are saying focus on prelims because you can say cutoff is jumping very fast, right? Yes, I mean, cutoff was around 17, I guess, and then it jumped to 36, 37, and then it jumped to 51, right? Yes, sir. So obviously बात है, सिंपल सी बात है कि फोकस आपको प्रीलिम्स पे भी करना पड़ेगा, बट मेंस को भी साथ साथ में लेके चलना पड़ेगा। इंटरव्यू भले अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो बाद में कर सकते हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन में भी इशू है तो उसको भी स्टार्ट में ही लेना पड़ेगा, राइट? यस सर। ओके, सो विल मूव ऑन टू योर फर्स्ट प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। विल डिस्कस एवरीथिंग कि आपने किस तरह से प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से क्या क्या चीजें पढ़ी, है ना। उसके बाद में ही विल डिस्कस ऑल द स्ट्रेटजी फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? ओके, स्टार्ट विद द प्रीलिम्स फर्स्ट. Sir, actually, I was preparing for the general banking examinations. That's why I have to cover all the portions of to hold the syllabus. I have to complete it fast. Then I practice. I gave around 80 to 90 mock tests or prelims before my examinations, and the practice is the most important, because we have to learn how to manage the time, because you will do the answers, but you have to manage the times. And then after you have to select the questions accordingly. Many students, they start the questions from the first questions. I will say no, this is not right attempt. You should first focus on the portions which you are strong. Like in reasoning, we have to do puzzle first. After that, syllogism and miscellaneous. If you complete this, then you can see after this you will got around 30 questions will be attempted. But if you start from the first questions, which may be in machine input or output input like questions, then it will be difficult for you to manage. And for for quantitative aptitude, I will say that first practice the data interpretation questions, because it will be much more scoring, and around 3-4 DI will be there in questions. So if you solve these questions, it will be around 20 questions will be solved. After that, you do the arithmetic, and then so first you have to choose the questions, and then you have to practice the mock. Many mocks you have to practice before going the examination hall for prelims.
ओके, सो फॉर प्रीलिम्स ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस इज द की, है ना? Yes, sir. You'll have to build the concepts first and then Practice. practice Yes. properly. I mean, you said you have attempted 80 to 90 marks, right? Yes, sir. स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उनको एक मॉक देना, 2 घंटे का मॉक है, उसके बाद में एनालिसिस है, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का ये टाइम लग जाता है Yes, एक sir. मॉक में. सो यू Yes. गिव 80 to 90 marks. So Yes, sir. that's the key. That's when you will realize, or you can say you can strategize Hmm. properly कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना है. जैसे आपने Yes, sir. बताया कि रीजनिंग में यू विल हैव टू स्टार्ट विद पजल्स. आई मीन किसी Yes, और sir. का कोई और टॉपिक अच्छा हो सकता है ना, Hmm. सिलोगिज्म Hmm. किसी का अच्छा है, किसी का अगर मान लीजिए ब्लड रिलेशन या ऐसा कोई टॉपिक Hmm. अच्छा है Hmm. जो Hmm. Hmm. मिसलेनियस में आ जाता है, तो Hmm. वहां से Hmm. शुरू कर सकते हैं, है ना? Yes, sir. ऐसा नेसेसरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन आया तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ. तो No. वैसे ही आपको क्वांट में करना है कि क्वांट में अगर आपका कोई अच्छा Hmm. टॉपिक है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें बोल सकते हो कि भाई साहब मैं ही हूं जो हूं, है ना, Hmm. वो Hmm. Hmm. क्वेश्चन पहले शुरू कीजिए, देन Yes, उसके sir. बाद में बाकी क्वेश्चंस पे मूव ऑन कीजिए, Yes, राइट? sir. Yes, sir. ओके, सो दैट्स द बेसिक स्ट्रेटजी कि Yes, sir. प्रैक्टिस करनी है. सिंपल सी बात है, Hmm. प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी. कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कीजिए, देन उसके Hmm. बाद में प्रैक्टिस कीजिए. क्वेश्चंस जो है वो मॉक के इसी तरह से दीजिए जैसे आपका एग्जाम चल रहा है ना, Yes, sir. तो उसको उसी तरह से प्रिपेयर कीजिए कि हाँ. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू कर दिया. यू विल Hmm. हैव टू मूव. मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ के अगले क्वेश्चन पे जाना पड़े, Hmm. वो Hmm. कीजिए भले, लेकिन क्वेश्चन उसी से शुरू कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हो, है ना? Yes, sir. एंड उसमें भी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पजल मुझे बहुत अच्छी से आती है तो मैं Hmm. पजल में फंस गया और मैं उसी में स्टक हो गया कि ये पजल तो मैं हाँ. ही निकालूंगा, है ना? बहुत Hmm. सारे बच्चों के साथ हुआ होगा, है ना? कुछ क्वेश्चंस होते हैं ब्लड रिलेशन के, इजी लगते हैं. इस Hmm. बार जो क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का आया था एग्जाम में वो बहुत Yes. डिफिकल्ट था, है ना? Yes, तो sir. Yes. उसमें अगर कोई फंस गया या फिर डिस्टेंस डायरेक्शन का कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो उसमें कोई फंस गया, तो फिर वो तो उसकी गलती है कि उसको उस चीज Hmm. पे स्टक नहीं रहना चाहिए. ट्राई Hmm. वंस और ट्वाइस, उसके बाद Hmm. में उस क्वेश्चन को छोड़ के Hmm. विल Hmm. गो Hmm. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो कमिंग फॉर द मेंस, कैसे Hmm. कैसे प्रिपेयर किया? पहले तो एग्रीकल्चर इन इटसेल्फ आपको भी पता है वास्ट सब्जेक्ट है एंड Hmm. क्वेश्चंस Hmm. कहीं से भी पूछ सकता है आईबीपीएस. Hmm. Hmm. आईबीपीएस का Hmm. एज सच कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है कि 4 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 4 क्वेश्चन सॉइल साइंस के, Hmm. 4 क्वेश्चन एनवायरमेंट के. तो ऐसा तो कुछ कॉमन नहीं है. तो कैसे Hmm. आपने प्रिपेयर किया और कैसे कैसे इस चीज को आप आगे लेके आए? Sir, for mains, I will say that first clear your basics. Because if you do not clear your basic, then everything will be mess up. You have to first clear your basics. Start from your BSc notes, BSc, whatever you have studied in BSc courses, start from, because in IBPS recently they ask question from very basic portions which we cannot answer. We know many things, but the basic portions we don't know because we cannot answer that question, that portions. So you have to start your basics. And I also studied my BSc notes also. Around 3-4 months I prepared for mains examinations. And I studied my BSc notes, and I also bought the Agri Chandigarh notes. I have those notes. I also studied that notes particularly, and many are there na, they study many notes from different coaching institutes. I will say no, this is not right. You have to study only one notes, and we have to focus on these notes only, and we have to study each and every line of that note. And clear your basics. This is enough for mains, I will say. And for general aptitude, like many schemes, you can see your you can take help from the net also. For schemes etc. For years you have to study this also, because IBPS is very much unpredictable. They give questions from anywhere, so you have to be ready for this type of questions. And if any questions if you don't know, then I will say you leave it question, you leave the questions, because negative marking will also be problematic for us. That's ओके, why. सो बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि एक ही सोर्स को फॉलो कीजिए, है ना? Hmm. एक ही सोर्स को इतने अच्छे से फॉलो कीजिए, इतने अच्छे से रिवाइज कीजिए कि उसके कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए, Yes. राइट? ऐसा नहीं कि दीवार, सॉरी, हाँ. आपका जो हाँ. स्टडी टेबल है उसके ऊपर अंबार लगा हाँ. देना, है ना, किताबों का, कि ये मेरे इस वाले कोचिंग के नोट्स हैं, Hmm. ये मेरे यहाँ के नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ये Hmm. मेरे बीएससी के नोट्स हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना है डेफिनेटली. तो No. एक चीज को फॉलो कीजिए और उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कीजिए, उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, एंड देन ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस इज द की. तो प्रैक्टिस Hmm. यहां पे भी आएगी, जैसे आपकी प्री में आई थी, यहां पे भी आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी, Hmm. लेकिन बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से फॉर्म करने पड़ेंगे, एंड देन कंटिन्यूस रिवीजन देना पड़ेगा. बिकॉज ऑब्वियसली बात है कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो जाएंगे लेकिन फैक्ट्स याद नहीं हो पाएंगे. तो फैक्ट्स के लिए ऑब्वियसली बात है रिवीजन करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा आपको. तो वो वाली चीज आप हाईलाइट कर रहे हो कि हाँ रिवीजन करो, एंड देन Yes. उसके बाद में प्रैक्टिस करो. तो प्रैक्टिस Yes. जब कर रहे हो वो भी वैसे ही करो जैसे एग्जाम में करोगे, है ना? ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मुझे नेगेटिव मार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ओवरऑल जो है 60 में से 50 या 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, है ना? तो ऐसा नहीं करना है. प्रॉपरली उसी तरह से एग्जाम देना है जैसे आप फाइनल एग्जाम दोगे, है ना? तो Yes. उसमें
फोकस रहेगा आपके मिनिमम जो आपके नेगेटिव मार्क्स हैं उतने हो सकें जितने आपके मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं, है ना। तो मैं तो टारगेट यही मानता हूं कि ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन से ज्यादा आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए, है ना। नो सर। तो 5 से नेगेटिव ज्यादा चले गए तो वो ज्यादा नुकसान करेगा, यस रेदर देन फोकसिंग ऑन कि मैं कितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। फोकस शुड बी ऑन कि मेरी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। यस सर। तो यस एक्यूरेसी इज की मेंस में तो ऑब्वियसली बात है, वैसे तो हर एक एग्जाम में ही आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, बिकॉज हर एक एग्जाम नेगेटिव मार्किंग वाला होता है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको ले डूबती है फिर बाद में, है ना। यस सर। चलो, मेंस भी हो गया, प्री भी हो गया, दोनों ही चीजें हमने अच्छे से क्लियर कर ली। यस किस सर। किस तरह से आपने प्रिपेयर किया था, किस किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर आईबीपीएस एग्जाम। थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए बता दीजिए, आपने कहाँ से कैसे प्रिपेयर किया और आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या रेकमेंड करोगे। Sir, for interview, I started for preparation after the mains examinations. First, I will say that in interview, they will not judge that how much you know. They will judge how you will communicate, if you can handle the situations or not. So you have to be very good for the communication skill. You have to adapt the communication skill very much. And if you don't know any answer, then say no. I cannot know that. I am not ready to apply to say the answer, or I am not able to answer these questions. Say it firmly. But if you fumble, and then it will be negative. If it is not your fault that you does not know any questions, so it is not so much problem. But if you fumble, or if you so much nervous, then it will be a negative point, I think. So first of all, you have to acquire good communication skill. And for me, I mainly followed several जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज होता है उसका आई फॉलोड वेरी मच, एंड आई बॉट ऑल्सो द एसीसी कोर्स ऑल्सो. दिस इज अ वेरी गुड फॉर मी ऑल्सो. एंड देन स्टार्ट लर्न द बेसिक स्कीम्स and years, they like the basic banking terminologies, basic agriculture, this only. Not Okay. much details, but basic you have to know. Okay, so basics of everything, whether it is Yes. agriculture, whether it is the scheme, whether it is the general knowledge, you should be Yes, sir. knowing all the basics for your interview. And basic thing for the interview will be communication and confidence. If you Yes, are sir. confident enough, you cannot say arrogant. Confident is the word for it. That you should be confident and you should be answering the questions properly. If you don't know Yes, the sir. answer, you can simply say that I don't know the answer, or I'm not able to recall the answer right now. I'll look up after the interview, or you can say something like that. And after that, properly confidence should be resonating from you, right? Yes, sir. Okay. So how many mocks did you give for your interview? Sir, mocks I give around 7 to 8 mocks. Okay, so that's the key. Actually, practice should be in your interview also. Practicing Yes, properly and analyzing what you can work on, or what you need to work on, so that Yes. final interview is very good, right? Yes, sir. Okay, so thank you, Subhajit, and congratulations once again on becoming Thank an you, sir. AFO in your PNB, and congratulations to your family as well. And Thank thank you, you sir. for guiding the students. If any of the students have any doubt, you can post your doubts in the comment section below. Shubhjit will definitely try to answer all those comments. We'll definitely try कि हम भी अपनी साइड से आंसर दें, शुभजीत भी आंसर दे, जितना हो सकता है प्रॉपरली स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए, राइट? Yes, sir. Okay. Thank you, Shubhjit. Thank you for joining us, and thank you everyone for joining this session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you also ACC team for giving me the opportunity to say my strategy in this platform. Sure, It is sure, very much proud for me. Okay. Basically, the thing is that these sessions are not just for the students or the selected students of the coaching. These sessions are very fruitful, or you can say helpful for the students who are preparing for it, right? Yes, sir. So Yes. they will know the exact strategy from the person who have just cleared, or you can say realized their particular dream that they also have, right? So that Yes. is the main approach with this. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you everyone for joining us. And you will be posting your doubts, or you can say comments in the comment section. And Shubhjit and I will be definitely looking into it, right? Yes, sir. Okay. Thank Yes. you.